Sir, first of all, thank you for giving me this opportunity. My name is Gurukul. Currently, I live in Pune, but I am from Ahmednagar district. Um I am currently I am in the last semester of civil engineering. Currently, I am pursuing beam internship from Unit Civil. In this internship, I have learned AutoCAD, Revit, SketchUp, Inkscape software. In the Revit, I have learned Revit architecture, Revit structure. Revit architecture, I have created different 3D model. And in structure, I have created structural model with reinforcement detailing. And in this internship, I have also I have also learned various beam concepts such as LOD, scan to beam, CAD to beam, various dimension of beam, uh, like that. And my hobbies is playing cricket, spending time with family, and uh, this is my hobby. And my short-term goal is to get a job in the cricket firm, and my long-term goal is to achieve good position where I can build my career and help the organization too. That's brief about myself. Yes, sir. That is Yes. all about myself. Yeah, that's brief about myself. All about नहीं, That's सब थोड़ी brief हो गया. about myself. That's brief about myself. Uh, Okay. Now, Mr. Runkar, you're looking for the job in the Beam modular profile. What do you know? Do yes, you know what is the job responsibilities of Beam modular? yes, sir. To create a 3D model, for creating 3D model, we generally use Revit software. Uh, we have to do the detailing and create 3D model. If we can create that model in architecture, if it is a structural model, then we can create it in a Revit structure. So that is all Okay. responsibility, creating a 3D model with detailing. Okay. What is BIM, Mr. Omkar? Sir, BIM stands for the Building Information Modeling. BIM is a process in which we create 3D intelligent model, and from that model we extract all the information which is required for the further project. Okay. In my company, there is a 2-year bonds, Mr. Omkar. Are you comfortable to continue with us? Sir, I am okay with sir 1 year bond. Why not 2 years? Sir, 2 year because sir I have learned already enough things for BIM. So I think 1 year bond is good for me. Okay. You mentioned in what's your strength? Sir, my strength is hardworking. I am hardworking person. I do the work very smartly in a less time, uh, and I have sir good communication skills like that. Okay. What is the use of nested family in Revit? Nested family is the family which is created inside other families. For example, door handle family is the nested family. Door handle. Correct. What do you understand by project parameters? Sir, project parameter is the parameter which we create in the project. We can do the scheduling and tagging of a project parameter. We can assign this parameter to the multiple categories like wall, floor. So this is project parameters. Sir. What is federated model? Sir, federated model in Beam is the combination of all the model which created by the different stakeholder in the construction project. What do you understand by We LOD? Yes, got it. use What do you understand by LOD 350? LOD 350 is the construction documentation. Sir. Construction documentations. What do you understand by 6D? 6D. Um, Sir, 6D is the building performance and facility management. What we do in that? Sir, we check our work is mainly sir regarding the energy source and sustainability in that. Okay.
what are the different level of maturities in BIM? Sir, there are the four level in it. Level 0, level 1, level 2, and level 3. In level 0, there is no collaboration, no information exchange. In level 1, there is some collaboration, but no information is exchanged. In level 2, there is a collaboration and some information is also exchanged. And in level 3, there is a uh, in level 3 there is a information exchange and there is a full collaboration. In this information we exchange through the common data environment. Okay, thank you so much Omkar, this was nice to talk with you, very good. वन आंसर Thank you. वाज मिस्टेक, ठीक है, तुम्हें बोलना चाहिए जब तुमसे मैंने बोला ना कि आर यू रेडी, आर यू कंफर्टेबल टू बॉन्ड विद अस फॉर 2 years, तो तुमको बोलना चाहिए आई एम हाँ हाँ कंफर्टेबल, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। आगे मेंशन करना चाहिए इफ दैट इज इन माय फेवर, दैट्स इट। अगर वो मेरे फेवर में है तो ठीक मैं है। कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब आपका फेवर क्या हाँ हो सकता बरोबर। है, आपका सैलरी ग्रोथ, यही हाँ तो होगा ना, हाँ हाँ ठीक है। बरोबर। तो यू कैन से हाँ हाँ यस आई एम रेडी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लाइक इफ दैट इज इन माय फेवर एंड दैट इनहेंस माय स्किल्स, तो हो गया। अगर हमको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बरोबर। तो हमको बॉन्ड भरने में क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ हो सकता है मैं बॉन्ड ना बरोबर करूं, मैं चेक बरोबर। कर रहा था कि तुम कितने दिन रुक सकते हो। ज्यादातर हाँ बीम की कंपनियां क्या होती है गाइस, वो 6 मंथ आपको ट्रेनिंग देती हैं, ठीक है। अब हम्म, उसके बाद तुमको केवल 6 मंथ उनसे अगर तुमसे काम करेंगे तो उनको लॉस है ना, हाँ तो दे कैन बी डू दैट, ओके। Okay, हाँ हाँ now बरोबर। next is Mr. Mallikarjun is ready. Mallikarjun and then Pooja and then Imran. Mr. Mallikarjun, ready? Yes, sir. Okay, if possible, on your video, please. Yes. Good. Okay, Mr. Mallikarjun, first of all, introduce yourself. Good morning, sir. First of all, thank you for giving this opportunity to introduce myself. I am Mallikarjun Nore, currently living in Bangalore. I am a hardworking engineering graduate specialized in civil engineering with an overall CGPA of 8.73. And along with my career, I completed a 5 months internship course on BIM. And in this, I learned AutoCAD, microtation, Revit architecture, and Revit structures, Navis work, etc. in HPS Institute, Bangalore. And in in this course, I created many projects such as two residential project, one apartment, and one cat to beam, and many parametric families I created. And coming through my family, I am belongs to nuclear family, and in my family there are 5 members. And my strengths are I am hardworking and self motivating person, and my short term goal is to get a job in a reputed company like yours. And my long term goal is to be achieve in to be in a higher position in that company. And lastly, I am a quick learner, and I can learn from my past mistakes. Thank you for this. Thank you, sir. Great, very nice, excellent. Uh, Last you can say that's brief about myself. That's okay, sir. Okay, now Mr. Mallikarjun, what's your hobby? My hobbies are watching movies and swimming. Also, Okay, watching like movies or watching songs? movies, sir. Movies. Okay, Yes, which sir. movie is your favorite movie? My favorite movie is the Dangal, sir. Dangal. Who was the director of that movie? I What is the I character don't. that there are two girls, I think, if I am not wrong, in Yes, Dangal? three, four girls. Yes, sir. Four Okay, girls. sir. Oh, there are two main girls, right? Who's acting in that, right? What are the name Uh, of that girls? I didn't remember, sir. I watched many before. But this is your favorite. Yes, sir. Okay, sir. I like that movie, sir, to Yes. watch. So if anything is your favorite, you Yes, must sir. know everything about it. Okay, sir. Okay, sir. Who is your ideal person? Ideal. Ideal person. Um, Ideal means I want to become a civil. Uh, I didn't have such ideals. I want to means I don't have such ideals, sir. Okay, sir. Okay, you don't have any idols, right? Yes, sir. Okay. Uh, Maybe, but there is everyone have their own ideal persons. You must have. If you have, then good. Okay, Otherwise, sir. you can say the best idol is your father or your Yes, sir. mother. Okay, sir. Okay, sir.
ठीक है. And if you just say कि my ideal person is Dr. Abdul Kalam, Okay. now I'm going to ask the cross Okay, questions. okay, sir. ठीक है. Therefore, Better answer is my father, my mother. is okay, sir. Okay. uh okay, Mr. Malkarjun, you just learn the microstressor. What is the use of microstressor software? Just you just Uh, tell us complete use. Microtation is also like AutoCAD. In this, we create 2D model, 2D drawings, and in microtation we also create 3D. And microtation is created by Bentley software, sir. What is the file format? Dot DWG, I think. .dwg. And then AutoCAD file format? Um, uh, okay, sir. Okay. I ठीक है, तो you did. must know. Okay. Okay, sir. And other softwares, like Revit, right? What are Yes, the sir. file formats in Revit? Dot RVT, dot RFT, dot dot RFA, or dot RFT, dot RFA family. .rte, you're not missing. Art, Okay. What do you understand by 4D? 4D is all about fabrication, sir. In 4D, we detailed bolts, steel regarding we can detail in that, sir. 4D. In my company, there are some team members who is not motivated for the works. I just want to hire you as a team leader. How can you motivate them? By I motivate by showing my progress in work and dedications, and how to how to achieve things in a very fast, and that's all. By showing that, all they can motivate from by seeing my work dedication, sir. Okay, suppose you are the owner of the company and you're just hiring some persons and they are just coming in a company, learning the things, and they are going out for the any other companies. How can you manage this problem? No, sir. I can manage by taking 1 year bond or 2 year bond. reg- Okay, means you will try to control by the bonds. Bonds, yes, sir. Or um, by by saying that my in by giving company means what I say, some helps for that person, sir, about. Means you try to help your team members, like Yes, sir. your employees, right? Yes, sir. So basically your steps you will take, that is like we are going to take the bonds, right? Yes, sir. Yes, sir. So can we do the bond with you? Yes, sir. You can do my up to 1.5 year bond. Can you do, sir? What my Ye- company policy is there, na? How can Yes, you decide that? yes, sir. Yes, sir. So you can say yes, I'm ready for the bond because I of am. you already, you Oh, sir. already Yes, said, sir. right? Okay. uh, Mr. Malkarjun, what are the good companies in India who's working on the BIM? There are many companies in Bangalore, WSP, Arcadis, Atkins, uh, and Target, Beam Solutions. Like there are many companies. Okay, great. Why you want to make your career in BIM? Because I want to go in a software field. Therefore, BM is also in software like, and I can grow in my career in civil engineering only. Therefore, I choose BIMs. What is the difference between 3D models and BIM models? In 3D models only have means 3D models means Revit models are all called 3D models. In a beam, it is the process by creating 2D to last 3D, and also we have used in last construction process. All this process is called beams, sir. Okay. Right now, what are the technical skills you have? I have technical skills. I know AutoCAD and Revit architectures, structures, and microtation. Navis works also I know. Okay. Uh, what are the file formats of Navisworks? .nwd, .nwf, and .nwc catch. Okay. Yes. What is the benefit of using Navisworks in BIM models?
Navis work is used for the class detection process, and also used for the 4D simulations, means construction process with the time, and Navis work also for the cost detection with means cost plus time. This all used for Navis works we use. Okay. If I'll hire you, what are the benefit I can get from you? I can. I am a quick learner, and I also I'm quick learner, and I can give some benefits to company by achieving something in your company, sir. And I You can say like I have a good knowledge of Revit, so I can yes, say yes, sir. create the 3D models as well as beam models for you. Yes, I sir. can do the estimations. I can do the very good. I have a good knowledge of Revit family. आप Okay, अपने sir. गुण को गिनाओ. You just give your the good points that I Okay, sir. have. I can serve you. Okay, sir. Okay. Thank you so much, Malkarjun. This was Thank, nice to talk with you. thank you, sir. Thank you. Okay जी. चलो काफी अच्छा था इनका मॉक मीन्स अप्रोप्रिएट था ठीक है मीन्स ओके था लेकिन अभी और काम करना बाकी है that I'll tell you after this mock. Okay, now Pooja. Yes, sir. Okay, okay. You are doing from the mobile phone, right? If possible, just try to pick somewhere like ऐसे रख दो. उससे क्या होता है कि जब कभी भी मॉक लंबा चल गया ठीक है मान लो मॉक है तो ये तो चलेगा इसका मान लो 5-10 मिनट टाइम है इंटरव्यू कभी लंबा चल गया ना तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी 35 मिनट 40 मिनट इंटरव्यू चल जाता है ओके तो अभी रहने दो अभी मैनेज कर लो कोई दिक्कत नहीं है बट फॉर द फ्यूचर्स याद रखो कि हमें ये बेनिफिट लेना है कि हमें पता रहे कि यार ये इंटरव्यू आधा घंटा चल गया तो हमारा हालत खराब हो जाएगा अब पता चला हाथ दर्द कर रहा है हंस हंस के आंसर भी कर रहे हैं एक्सप्रेशन भी खराब किया वो भी समस्या है ऐसा कई बार हो जाता है ठीक है तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है या फिर लैपटॉप से अगर करते हो उसका ध्यान रखना है बोलो पूछो क्या बोल रहे हो थोड़ा आवाज लैपटॉप का कनेक्ट नहीं हो रहा था तो इट्स फोन ओके से कर लिया। वो कोई दिक्कत नहीं बट ये चीजों को ना हमें बारीकी से छोटी छोटी चीजें है ना ये लेकिन अब सोचो कोई अगर हमको आधे घंटे ऐसे करने के लिए बोल दे अब मैं एक्सप्रेशन अच्छा करके मुझे आंसर भी करना है और ऐसे हाथ पकड़ के दर्द हो रहा है फिर क्या होगा माइंड चलता रहेगा दर्द पे आंसर खराब होने लगेंगे ठीक है अभी मुझे कोई कॉल बार बार करता रहे और मैं क्लास भी ले रहा हूँ अब मैं सोचूं क्लास मैनेज करूँ कि कॉल मैनेज करूँ तो नॉट पॉसिबल ओके ओके Yes, नाउ पूजा रेडी फॉर द मॉक yes. ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ My name is Pooja. I'm from Sonipat, Haryana. I've completed my BTech in civil engineering in 2022. And after that, I have started working as a trainee engineer in Delhi. There, my main responsibilities were client meetings and managing data and some of the site supervisions. After that, I found myself limiting to that career. So I switched to BIM and then I've pursued online internships in BIM. There, I learned some softwares like Revit, AutoCAD, Primavera, Navisworks, and I learned designing, I learned 3D modeling, planning, and scheduling and estimation. My family background says my mother and father both are government employees, and my sister is doing well. That's a brief about myself. okay means you just learn in the like you just did your internship in BM right so what you learn in that internship In that internship, I have done some softwares in AutoCAD. First, the AutoCAD, the only the drafting part. Then I've done Revit for architecture and structure. And in architecture, I've done the 3D modeling with all the data points, dimensions, and materials and everything. And in structures, I have done these structures, I have done wood structures, and the basic of the basic gist for the master drawings. in Revit structures so basically you have skills of Revit architecture Revit structure and AutoCAD right so if I just want to know in the brief what you know about Revit structures so can you just tell us what you know about Revit structures means what are the things you can do in the Revit structures Revit structures, in we can design steel structures and we can design wood structures. We can insert, we have to load families and we can design trusses and we can design framing structures, lumbar or timber structures. okay means basically we can provide the reinforcement right
Okay. Minimum dia bars, how much we can provide in column in Revit structures? 12 mm. 12 dia we can use for the Revit structures. Okay, great. And in sorry, difference between ties and stirrups in the Revit. Sorry, not in Revit. Difference between ties and stirrups. When it comes to the vertical components, they are just stirrups. And when we talk about the horizontal components, they are called ties. Great. And what do you think? What is the difference between CAD model and B model? When we talk about CAD model, is just the 2D drafting where we give the dimensions, only the dimensions and the area part, or we can give up the build-up area also. But when we talk about Revit structures, we talk about all the dimensions, yeah, for 4D and 5D, like the materials we are using, the ratio to which we are using it, and uh, seeing it visually in all the directions, perspective view, all the perspective view of the 3D model. Great. Okay, so means you not learn any other softwares like Naviswork, you don't know, right? You just know about Revit architecture structure. I do have basic knowledge for Navisworks and Enscape. I do a rendering in Enscape. What is the use of Inkscape? This is a rendering plugin used for Revit and also for SketchUp, or there are other also softwares, but Revit works great with the Enscape. What is the use of call out command in Revit? Callout command is used for highlighting uh, anything specific. When we cut out a section, we just call out a simple any section of that section and highlight that for call out space. Great. Uh, Pooja, right now you are living in Haryana as per your says, right? Yes, sir. Okay. So, like, do you have any plan for like Swift? Like, if that job in Delhi or Gurgaon, are you comfortable to switch in the Delhi or Gurgaon? Yes, sir, I'm comfortable. If the job opportunity is good, I can relocate. Okay, you can relocate for the Delhi and job. Okay, and also there is a 2 year bonds in my company. Is it okay for you? Because in last Yes, company sir, you just left in few months only, right? yes, sir. So are you Actually, comfortable? that was contract. Earlier, Okay, that was I working contract. It's 1 year contract, and now I'm seeking for something secure. So I'm okay with a 2 year contract. you complete that 1 year contract? Okay, that's great. Pooja, how can we do the schedulings in Revit? Do you know? For scheduling, we like if we have to schedule for doors, we go to the schedule tab. Then we find the door option. Then we have to select the parameters like length, height, width, rough height, material used, family or type. Then we click on OK, and we have a table generated Okay, for us. okay. One last question from you. Where you want to see yourself in next 3 years? I think. In next 3 years, I want to work in a good company where I can make myself to that potential that I can handle complex projects by myself independently, and also train other freshers so that I can help them too. What are the qualities required for become a team leaders? For a team leader, you should have motivational, you should be encouraging, you should have good communication skills, you should be active, uh, and you should have leadership qualities so that everyone should be as a team, work as a team, cooperate as a team. Great. Nice to talk with you, Pooja. We'll see you later. Thank you so much. Okay. Now, next is the Mr. Imran. So, Yes, Imran. Ready? Okay. yes, sir. Yes, Imran. If possible, on your mic, on your video also. Okay. So on करा sir. Video is not on. Maybe it's n- not on right now. Okay, just
Next one is Faizan. Your next is yours turn. Yes, sir. Okay, Imran, let's start with yeah, this only because I think there's some problem. Sir, on नहीं हो रहा सर वीडियो. यस ठीक है गाइस, इन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कभी भी आपका इंटरव्यू होने वाला है, इनकी पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और क्या बोलते हैं कि मुझे नेटवर्क का प्रॉब्लम, जैसे कि अभी क्या बोलते हैं पूजा के भी इंटरव्यू कुछ है, वो मैं बात बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें और इनको इम्प्रूव करनी चाहिए। और ऐसे ही थोड़ा बहुत ओमकार का भी था। ठीक है, जिस तो इन चीज़ों का हमें विशेष, जैसे कि वो ओमकार का क्या था, चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड ही वाज इन विलेज, तो अभी इनको बाहर लेना पड़ा, थोड़ा बहुत लाइटिंग वगैरह का प्रॉब्लम था वो, चलो अभी के लिए मैं चल जाता है, फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, इनको ठीक रखना पड़ेगा। थोड़ा सा जैसे कि अभी पूजा का जब इंटरव्यू हो रहा था तो इनके इंटरव्यू थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आया था, तो कुछ चीज़ें मतलब लगभग सही था, थोड़ी चीज़ें 1-2% की कमी हो रही थी, कुछ बातें कट जा रही थी, ये प्रॉब्लम होती है। अभी एक लड़के का इंटरव्यू हुआ, तो जिस दिन इंटरव्यू होना था उसी दिन खूब बारिश हो गई, पूरा इंटरनेट खराब हो गया। नागपुर में एक दिन बारिश हुई थी अभी पीछे, अगर नागपुर वाले जो लोग हैं, उनको पता होगा। ठीक है, बहुत बारिश हो गई और उसका इंटरव्यू खराब हो गया। ठीक, छोटी सी चीज़ ही, बारिश हो गई। अब अगर उसको समझदारी क्या करना था, उसको मेल कर देना था, मैसेज कर देना था कि ड्यू टू दिस रीजन आई कांट अटेंड दिस। एक लड़की है भोपाल की, सी सी लाइक इज गुड इन देयर बीम, तो उसने बहुत अच्छा काम किया, उसने अपने इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए जाके साइबर कैफे में बैठी। हो सकता है सही सबके साथ नेटवर्क का प्रॉब्लम, उसको साइबर कैफे में बैठे और साइबर कैफे वाले को बताया कि मेरा इंटरव्यू है, तो उन्होंने एक केबिन टाइप प्रोवाइड कर दिया सो दैट कि यू कैन डू योर बेस्ट। ठीक है, तो उसका बहुत अच्छा से इंटरव्यू हुआ, उसका सिलेक्शन भी हो गया, सी इज वर्किंग इन भोपाल। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है, और यही छोटी छोटी चीज़ों से चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज इमरान, रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Ready, sir. ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। First of all, first of all, thanks for giving this opportunity. My name is Syed Imran Hussain. I am from basically I am from uh, Telangana district, Rajana Sirsila. Currently, I am living Hyderabad. I have done BTech in civil engineer in the year 2022. Now I am pursuing BIM course from Unix Civil. I have learned Revit architecture, Revit structure, AutoCAD. In this I learned 2D plans and 3D models, and I have done many projects like CAD to BIM and two residential projects and one commercial residential project. ओके, मिस्टर इमरान, व्हाट्स योर हॉबी? So my hobby is traveling and spending time with family. Last time where you travel? Last time I come Hyderabad only, sir. When? I in before last month. Last month. Last month. Jama Masjid in Hyderabad? I'm not sure, sorry. No, sir. No. What is famous in Hyderabad? Charminar, sir. Hyderabad. Charminar, yes, Charminar. Charminar is famous in Hyderabad, right? What is the height of Charminar? Don't know, sir. You're a traveler. You must know the informations about that place or any place, okay? Like I just asked with the Mallikarjun. His favorite movie is Dangal. What was the name of that girl? If that is favorite, okay? So traveler, you must know about the locations, okay? Okay, Imran, what are the companies you know which is working in the beam? It's Beam Heroes, RTX Solution, KPR Solution, and Tech Pennar. This, Okay, this, ठीक है. Why should I hire you? because my skill sets is completely suits for your job which you posted in. Okay. What's your strength, Mr. Imran?
My strength is quick learner. So that's रोजा है क्या? sir. रोजा है क्या आज तुम्हारा? Yes, sir. थोड़ा एनर्जी डाउन है, कोई बात चलेगा. थैंक यू सो मच इमरान, दिस वाज नाइस टू टॉक विद यू. Okay. ओके जी, चलो फैजान, रेडी? मिस्टर फैजान, हेलो. ठीक है जी, चलिए. क्या स्कोर आप लोगों ने गेट किया बता देता हूँ. फैजान, इफ यू आर रेडी जस्ट डू द मैसेज. मॉक इज ओवर नाउ. गाइस, व्हाट आर द स्कोर्स यू गेट? ओमकार 5.5, ठीक है, एंड मल्लिकार्जुन 6.5, and Pooja got 6, Imran got 5. This is the score you get. Now you are going to handle with Faizan, then I'll tell about them also. Yes, Mr. Faizan, ready? Mr. Yes, sir. Am I Oh, audible? yes, you are. Mr. Faizan, introduce yourself. So, first of all, good morning, sir. And thank you for giving me this opportunity. And my name is Faizan Sheikh Grisi. I basically I belong to Shahjahanpur, Uttar Pradesh, but currently I live in New Delhi. I completed my graduation in BTech in Civil Engineering from Abdul Kalam Technical University last year. After completed diploma in Civil Engineering in Imperial University, Lucknow. Currently I am pursuing BIM professional course from Unix Civil. I learn so many software like AutoCAD. ये नहीं करना है, इसको नीचे कर लो. Yes. Sorry. I learned too many. I learned too much software like AutoCAD, Revit, Navisworks, and MEP. And yeah, I have done some projects in uh, Revit, Navisworks, and other softwares. Okay. What do you know about AutoCAD? So AutoCAD is a 2D drafting, 2D and 3D, 2D drafting and 3D modeling software in which we can create our plans, elevations, sections, and etc. Okay. Mr. Faizan, right now you're doing the preparations for the beam. Do you know about beam? What is beam? So BIM is stand for Building Information Modeling, which is a detailed digital presentation of any building or structure, which is Okay. very beneficial for projects. Okay. What's your weakness? So I am detail oriented. Okay. Give me an example so that I can relate कि you are such a detail oriented person. So if there is task given to me, I am very keen to complete it at time. That's my In weakness. past, in example, can you just give us कि I did that. Like like in my college activities and if any project is given me in college, I completed in my given time. Okay. What was the project in college? So my college fiber reinforcement polymer. Fiber reinforced polymer, right? Okay. Means CFRP, carbon fiber, GFRP. GFRP. Okay. Just explain about GFRP because you're detail oriented. Do you know you must know about the everything about that. The project we study about the GFRP. There was a three students team in my group, and I was leading that group. In that project, we learned about how to reinforce and rehabilitation of beam and columns with the help of GFRP. In that process, we firstly we have to check the weakness of beams and columns, what are the damage. Then we prepare about the layer of GFRP on beams and columns to rehabilitate it. Okay. How many teams was there? Means in your team? Two include three including me. 3. Okay. At what time you wake up today? So I wake up at 9:30 because 9:30. I slept in morning that time. Okay. Because of Roja, I think. Yes. Okay, no sure. Okay. Who's your ideal person, Mr. Fajan? So definitely my father. Okay. Which quality of your father's you adopt in yourself? So he was truth person and he never lies in. I I believe in he never
say lie because it is important for as well as this era and It's okay, relax. and because currently he is no more in this world. That's why I am so close to him. That's why Great. So you adopt that habits. yeah. Excellent. Okay, what's your hobby? So my hobbies are like surfing and exploring new things. ओके, थैंक यू सो मच फैजान। अभी मैं ज़्यादा बीम नहीं पूछूंगा क्योंकि आप लेट ज्वाइन किए हो और उतना आपको पता नहीं है उसके बारे में, तो आपको आगे ट्रेनिंग करना ही है। थैंक यू सो मच फैजान, दिस वाज नाइस टू टॉक विथ यू। ओके, ठीक है गैस, छोटे छोटे सजेशंस हैं गैस आप लोगों के लिए, बस छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं, बाकी तो सही था। तो जैसे कि अभी फैजान ने ना, तो फैजान जैसे कि टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, कोशिश करिएगा कि जैसे जैसे आप देखिए, मैं भी टी शर्ट ही पहनता हूँ क्लास में, आपको पता ही है। बट मैंने आपको बोला था ना कि एक प्रोफेशनल मॉक लेना है, इसलिए मैंने शर्ट डाली, ठीक है। बिलीव करिए, मैं सुबह टी शर्ट ही पहना हुआ था, उसके बाद शर्ट पहना, ठीक है। क्यों? सो दैट कि हमें प्रोफेशनल दिखना है, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ शर्ट पहनने के लिए या फिर प्रोफेशनल बनने के लिए, मैं ही ना बनूँ तो फिर मुझे, मैं वैसे इंसान नहीं हूँ। मैं जो बोलूँगा पहले मैं खुद रहता हूँ। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि डेली अपनी एक्टिविटी को आपको ट्रेस करना चाहिए, डायरी पे लिखना चाहिए। मेरे पास हर मिनट डायरी होती है, ठीक है, तब मैं बोलता हूँ। और ये होना चाहिए आपके पास, जो भी हैबिट के लिए मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, वो हैबिट मेरे अंदर भी होनी चाहिए। इसलिए पहले मैंने शर्ट डाला, फिर मैंने आपको इन्फॉर्म किया इस चीज़ को कि आपको भी ऐसा करना है। तो फर्स्ट थिंग ये, तो इस चीज़ का आप आगे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज, जब भी कभी शर्ट वगैरह आप पहन रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए बेसिकली, आप अपने लाइफ में कैसे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को जज नहीं करता मैं, नहीं करना चाहिए। बस इंटरव्यू के लिए आपको थोड़ा सा उसको प्रेस वगैरह कर देना चाहिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा आपका। देखिए आप क्या है ये कुछ पता नहीं है, आप 15 मिनट में क्या दिखाते हैं इंटरव्यूअर को, वो डिसाइड करता है कि आपको पैकेज क्या मिलेगा। कुछ लोग देखिए उसी 15 मिनट में कम नॉलेज में, ठीक है, टू बी फ्रैंक अगर मैं बताऊं तो मेरे कॉलेज के जो टॉपर्स था, ठीक है, मैं टॉपर नहीं हूँ, ठीक है, मेरे कॉलेज का जो टॉपर था शायद वो मेरे से कम सैलरी लिया होगा, ठीक है, जब भी मैं जॉब में था। हो सकता है मेरे कॉलेज का जो गधा सबसे लड़का होगा, हो सकता है मेरे से ज़्यादा सैलरी लिया हो, ठीक है। मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं डिसाइड करता है, एजुकेशन भी डिसाइड करता है, एजुकेशन ही नहीं डिसाइड करता है कि व्हाट सैलरी यू आर गोइंग टू गेट। देर आर बिग पॉसिबिलिटीज ऑफ द कि हाउ यू मैनेज द थिंग्स, ठीक है। जैसे कि आपने अगर बचपन में क्रिकेट वगैरह खेले हुए हैं तो बहुत सी चीज़ें मैनेज करने की आदत है, उसका बहुत बेनिफिट मिल सकता है, तो आप कैसे मैनेज करते हो। एक इंसान का एक ऑरा होता है, ठीक है, शायद ये लोग आप लोग अभी शायद नहीं रिलेट करो, ऑफिस में जाके करोगे। आ, वो ऑफिस में आएगा, भले वो टीम लीडर नहीं है, बट ही एक्ट लाइक ए टीम लीडर्स और सी एक्ट लाइक अ टीम लीडर्स। ऐसा आप लोगों ने अपने फ्यूचर में कहीं ना कहीं देखोगे, पास्ट में शायद देखा हो किसी ने। तो हमें कैसे चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैसे करने है कि अगर आप ऑफिस से जा रहे हो, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, 6 बज रहे हैं, आप ऑफिस से जा रहे हो, छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने गार्ड को बोल दिया कि आप जाके लाइट बंद कर दीजिए, आपको खुद नहीं बंद करना है, आपने एक स्टेप ले लिया कि लाइट बंद कर दीजिए और आप एक टीम लीडर बन गए। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके दिमाग में आ गया कि हाँ यार, क्या बोलते हैं, लाइट बंद कर, जो लाइट का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, छोटी सी चीज़ है, बट आपने ऐसे कर दिया, ठीक है। किसी का बर्थडे है, ठीक है, ऑफिस वगैरह में आप जाओगे तो बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोगों ने जॉब किया उनको पता होगा, ठीक है। तो पूजा आपके भी ऑफिस में था ऐसे कुछ कि जैसे किसी का बर्थडे है तो यू नीड टू सेलिब्रेट, राइट, ऐसा होता था। हेलो। हाँ जी सर। यस, ठीक है। तो अभी जैसे किसी का बर्थडे है तो आपने एक स्टेप ले लिया कि चलिए सभी लोग कॉन्ट्री करके इसके बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे, दैट्स इट। छोटी सी चीज है। आप बोलोगे सर इससे टीम लीडर का क्या हो रहा है, इससे आप अपने टीम को अच्छे से समझ पाओगे। आप देखोगे कि आप जब किसी को एक्शन दे रहे हो तो क्या वो आपके एक्शन के लिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा कि बहुत अच्छा टीम लीडर एक आपके पीएम ही है, ठीक है। आपके पीएम एक बात को बोलते हैं, बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं। अब क्यों करते हैं, अच्छा करते हैं कि नहीं करते हैं, वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, बट वो एक अच्छे टीम लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आज उनकी पार्टी को छोड़ के कोई नहीं जा रहा, मतलब ही नो हाउ टू मैनेज अ पार्टी। अब वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं हम उस पर भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमें क्या सीखना चाहिए कि ही इज अ गुड टीम लीडर, तो वी कैन अडॉप्ट सम हैबिट्स, ठीक है। और टीम लीडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइस कि टीम लीडर वही अच्छा हो सकता है जो क्या बोलते चीज़ों को खुद भी फॉलो करे, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपको बार बार जैसे
चलो चलिए चाय की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको चाय कम पीना है और मैं खुद ही दिन भर चाय पिए पड़ा हूँ, तो इट्स नॉट लाइक कि अभी आप फॉलो ही नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे यार, खुद तो करते नहीं, मुझे करंटली बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप टीम लीडर अगर बनोगे, टीम लीडर की सैलरी ज्यादा होती है गाइस, ठीक है। टीम लीडर इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीम लीडर प्रोफाइल ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट टीम लीडर, बीम मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। इस तरीके से जो टीम लीडर होता है, यानी जो टीम को हैंडल करता है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज भले ही कम होगा, वो सैलरी अच्छा पाएगा, ठीक है। एक और अच्छी आपको हकीकत बात बताता हूँ दुनिया का, सबसे टेक्निकल काम करने वाले को सबसे कम सैलरी मिलती है, ठीक है। आपको पता है ये चीज, सबसे कम टेक्निकल काम, सबसे ज्यादा टेक्निकल पता है कौन करता है? जो एक आईटीआई वाला पर्सन होता है, खंबे पे चढ़ के उसको एक एक करके उसके ऊपर वर्क करता है, कितनी बारीकी का वर्क करता है, कितना मेहनत का काम करता है, ठीक है। आप लोगों ने शायद देखा हो, सबसे कम सैलरी उसकी होती है, ठीक है। और अगर बात करूं कि क्या बोलते हैं, जो डिप्लोमा होल्डर है, पूरा मॉडल पूरा लेआउट वो तैयार कर रहे हैं, बट उनको भी पूरी हाईएस्ट सैलरी, पूरा काम वो कर रहे हैं, हाईएस्ट सैलरी उनको भी नहीं मिल रही है। जो डिग्री होल्डर है, पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, उसको भी हाईएस्ट सैलरी नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, आपका काम रिड्यूस होने लगेगा, और आपका जो मतलब कि जो टेक्निकल पर्सन होता है उसकी सैलरी हमेशा कम होती है गाइस, ठीक है। आप देखिए, आपके कंपनी के डायरेक्टर की सैलरी ज्यादा होगी, आपकी सैलरी कम होगी, जबकि काम आप कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट को थोड़ा सा लीड करिए, कुछ लोग के अंदर है टीम लीडिंग क्वालिटी, वो आप इनहेंस कर लेंगे थोड़ा सा, तो और अच्छा वो बेटर हो जाएगा। चलिए, आपको कुछ और पूछना है इसके रिगार्डिंग, पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछा, उस दिन आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो एक बार रिपीट कर देना क्वेश्चंस। पूछा था कि आप अगर एक टीम लीडर हो और आपका और टीम लीडर का दोनों का लेवल सेम है और जो सीनियर है वो एक फ्रेशर को काम नहीं करने दे रहे, ये सोच के कि इसको तो कुछ नहीं आता, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करोगे? अच्छा, मतलब आप एक तरीके से टीम लीडर के लेवल पर हो, बट टीम लीडर नहीं हो, हाँ। राइट? हाँ, लेकिन वो थोड़े से ओल्डर है, ओके, और लेवल दोनों का डेजिग्नेशन, बट वो थोड़े से ओल्डर है, तो वो दिखा रहे हैं कि आप डोमिनेटिंग है और वो फ्रेशर को काम नहीं करने दे रहे। करेक्ट। और क्या बोलते हैं, एक मैनेजर भी है आपका, तो आप मैनेजर से कैसे उस चीज को हैंडल करोगे, राइट? या फिर उस टीम को हाँ, कैसे हैंडल अगर करोगे? आप वो काम टाइम पे नहीं दे पाए, जो आपको डेडलाइन दी थी, उस चीज को आप कैसे हैंडल करोगे? ओके, ये दूसरा क्वेश्चन था। हाँ। ओके, थैंक यू। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ये एचआर का क्वेश्चन है, मैंने लिख लिया। क्यों लिख लिया? ये मेरी एक लर्निंग है, ठीक है। अगर मैं चाहता तो इसको ऐसे ही रख देता ना, बट मैंने इस चीज को लिख लिया। लिख क्यों लिया? लिख इसलिए कि अब ये चीज मेरे लिए क्या बोलते हैं, फ्यूचर के लिए फिक्स हो गया कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो अभी इंटरव्यू में एचआर पूछ रहे हैं। कितनी बड़ी लर्निंग है, छोड़ देता तो चला जाता, बट नहीं। अब देखना ये क्वेश्चन से आगे किसी न किसी से मैं मॉक पे पूछूंगा, ठीक है। बहुत अच्छा इसका आंसर हो सकता है। देखिए कितना अच्छा सिचुएशन है कि आप देखिए, टीम लीडर है नहीं, लेकिन आपका जो एक ऑरा है, आपका जो एक वर्क स्टाइल है, वो टीम लीडर के जैसा दिख रहा है, ठीक है। जबकि एक टीम लीडर वहां पर पुराना है, ठीक है, और वो पुराना वाला क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है। जो वो पहले से रह रहा है उसको लग रहा है कि मैं ही सब कर रहा हूँ, बट ये याद रखिएगा, जो पुराना होगा ना, उससे बहुत से लोग पहले से ही छेड़ते रहते हैं, ठीक है। जनरली जो आप वर्क करेंगे, तो पुराना वाला क्या करेगा, टीम लीडर हमेशा फोर्स करते हैं, जनरली जो अच्छे टीम लीडर नहीं होते वो बार बार फोर्स करते हैं, ठीक है। तो फोर्स करके ऑलरेडी उनसे आप परेशान हो, ठीक है। तो आप भी एक अल्टरनेटिव देख रहे हो, ठीक है, आपके अंदर लीडर क्वालिटी नहीं है, इसलिए आप खुद उस लेवल पर नहीं जाना चाह रहे हो, बट आप देख रहे हो कि कोई तो है, ठीक है। आप देख रहे हो कि कोई तो है जो कि इस टीम को हैंडल कर सकता है, तो स्वाभाविक सी बात है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आप अपने टीम को आउटर डायरेक्शन से, सामने से तो नहीं कर सकते, आउटर डायरेक्शन से मोटिवेट करके अपने काम को डेडलाइन पर सबमिट करो, और सबमिट करने के बाद खुद को प्रूफ करो, यू नीड टू प्रूफ योर सेल्फ कि आई जस्ट डिड दैट, ठीक है। और उसके बाद आप अपने मैनेजर को, जो भी नेक्स्ट पर्सन है, उसको इन्फॉर्म करो कि सर हमारे साथ ऐसे ऐसे सिचुएशंस भी आई, बट आई हैंडल दिस सिचुएशन बाय दिस मेथड, और मैंने हैंडल करके खुद को प्रूव किया। स्वाभाविक सी बात है, दूसरे दिन आप टीम लीडर बनोगे फिक्स से, ठीक है। तो इस तरीके से सिचुएशंस को ऐसे आप हैंडल कर सकते हो कि आपके टीम के लोग ऑलरेडी उससे परेशान हैं, अल्टरनेटिव उस पर्सन से जो ओल्डर पर्सन है,
आप उनको से ऐसे ट्रीट कर सकते हो, ऐसे तरीके से ट्रीट कर, जस्ट लाइक आपने लंच पे ट्रीट किया एंड उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया कि हम लोग करेंगे आगे, आई जस्ट सजेस्ट फॉर द ग्रोथ। अभी आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आपकी बातों को लोग सुने। इसीलिए मैंने बोला कि छोटी छोटी चीज़ों की क्वालिटी से आप डोमिनेट कर सकते हो लोगों को, और पॉजिटिव सेंस में डोमिनेट कर सकते हो, और फिर उससे आपका ग्रोथ हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग? यस सर। बोलिए। सर जैसे हॉबीज का पूछा सर, फील्ड का पूछा सर, डायरेक्टर नेम, और सर ट्रैवलिंग का पूछा तो सर डेस्टिनेशन, इसमें सर क्या सेफ मतलब हॉबीज बतानी चाहिए जिससे आप मतलब जैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग थोड़ा इजी रहे, जैसे सर मूवी का देखिए अभी जैसे, एट हाँ देखिए कुकिंग बता सकते हैं, एक अच्छी हॉबी हो सकती है। कुकिंग में क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें आपको बनाना आती होंगी, है ना। कुकिंग एक सेफ हॉबी होती है। जैसे कि अभी मैंने अपने छोटे भाई से कल पूछा कि व्हाट्स योर हॉबी, तो उसने बोला कि रीडिंग बुक्स। मैंने बोला लास्ट टाइम विच बुक यू रीड? 1 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। ये कौन सी हॉबी हो गई? हॉबी तो वो होनी चाहिए कि आपकी इधर भी बुक होनी चाहिए, इधर भी बुक होनी चाहिए। हॉबी मतलब दैट, ठीक है। तो आप बता सकते हैं रीडिंग, सॉरी अगर रीडिंग बुक्स आपकी सच में हॉबी नहीं है तो मत मेंशन करिए। अब मेरे को कोई बोले कि कौन सी बुक आपने पढ़ा हुआ है, मैंने ई मिथ पढ़ा हुआ है, मैंने माइंड सेट पढ़ा हुआ है, ग्रो एंड थ्री क्रीज पढ़ा हुआ है, मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, ले लो। और मैं एक किताब को 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया ये चीज़ बताना। तो आप वही हॉबी बोलो जो हॉबी रियल है, ठीक है। और जैसे कि अभी क्या बोलते हैं, कोई मूवी बता सकते हो, वॉचिंग मूवी से बहुत अच्छा हॉबी होता है, क्योंकि मूवीज़ को आप जल्दी से याद कर पाते हो कि इसका डायरेक्टर कौन था, एक्टर कौन है, मेन एक्टर कौन है, बड़ा आसान है इसको समझना, ठीक है। वॉचिंग मूवीज एक अच्छा, या सीरीज देखते हैं, आजकल लोग वेब सीरीज के दीवाने हो चुके हैं, तो वेब सीरीज देखते हो तो वेब सीरीज बता दो, ठीक है। मैं नहीं देखता हूँ सो मुझे पता नहीं है, बट आप अगर देखते हो बता दो कि वेब सीरीज है या फिर वॉचिंग मूवीज है, या फिर बता दीजिए कुकिंग सबसे सेफ आंसर होता है, कुकिंग आप बता सकते हैं। क्रिकेट बता रहे हैं तो क्रिकेट के बारे में अपडेट रहिए, मूवी बता रहे हैं तो मूवी के बारे में अपडेट रहिए। जो भी आपकी हॉबी, हॉबी मतलब समझते हो वो चीज़ जिसके लिए अगर आपको पैसे न दिए जाए फिर भी आप करोगे, वही हॉबी है। अब ऐसा मतलब अगर जैसे, जिस भी चीज के बारे में बता रहे हैं उसके में थोड़ी डिटेल रखें, और पहले तो यस प्रिपेयर रहे, जैसे मूवी बता रहे हो एक मूवी का नाम प्रेशर रखें कि इसकी चीजें पता हो, यस क्रिकेट के बारे में पता करेक्ट। और क्या बोलते हैं, जैसे मैंने तुमको अभी बीच में ऐसे टोका ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, इससे ये मुझे जो रियलाइज हो रहा है कि यार तुम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को कैजुअल कर रहे हो। हम तो हो। फॉर्मल बात कर रहे हैं, तुम इसको कैजुअल आराम से ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे भी नहीं करना, ऐसे मतलब डरे हुए हो कैसे मैनेज करूँ यार, कैसे मैनेज करूँ, ये भी नहीं करना, रिलैक्स ऐसे, ठीक है। तो इस चीज़ का कितनी छोटी चीज़ है बट इम्पैक्ट बहुत बड़ा डालती है, यस। ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। आप अगर इन चीज़ों को बेटर करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। देखो छोटी सी क्वालिटी है, 15 मिनट में प्रूव करना है खुद को, ठीक है। चलिए होप सो सबके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए होंगे। अब चलिए आपके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। कल